Namaskar, Khambagani people, welcome back to my channel. My name is Amrita and today we are going to discuss the topic that is the fundamental unit of life, and in that we'll discuss the fourth topic from the content, that is cell structure. In the previous class we started the cell structure and we discussed the first topic, that is the plasma membrane. So now we'll discuss the cell wall in this class. So let's continue with the cell wall. Okay. So we have discussed the plasma membrane or the cell membrane in the last class. So what was plasma membrane? The outermost covering of the cell. But there is another structure which is being there. Suppose this is your cell. Okay. Now what happens is, in your cell, in animal cells, there is a plasma membrane which is being there. So this is your plasma membrane. This whole is a plasma membrane. But what about the cell wall? But what about the plants? So plants have extra structure outside the plasma membrane or the cell membrane. इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल सेल्स के अलावा प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अलावा ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? इट इज बिकॉज दिस सेल वॉल, इट एक्चुअली गिव्स द strength. It gives strength to the whole cell, because see what happens is, because the plant cells, these plants, they live outside in the harsh environment. बाहर रहते हैं, धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, सब इनको bear करना पड़ता है. Okay, so they have to bear what? They have to bear winter, they have to bear summer, they have to bear rainy season. Each very harsh environment. They don't have homes for themselves. So what happens if the cell wall is not being there? What will happen? The cell won't be able to survive. The plants won't be able to survive because this plasma membrane or the cell membrane is not that strong. वो इतनी मजबूत नहीं है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्लांट को सर्वाइव करा सके हार्श एनवायरनमेंट में. तो उसके लिए क्या जरूरी है? एक एक्स्ट्रा कवरिंग जरूरी है, जो कौन देता है हमें? ये सेल वॉल. ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है. तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखती हूँ, इफ आई राइट इट लाइक दिस, सो दिस इज योर सेल वॉल and outer covering outside the cell or outside the plasma membrane, and this one, the black one, which is inside, जो अंदर की तरफ है, वो क्या हो गई आपकी? Cell membrane. Okay, writing in a short form. So what is the basic feature of the cell wall? So क्या करती है cell wall? क्या provide करवाती है? What it provides? It provides strength and support. Okay, strength and support to the plant. All right. इसके अलावा किसकी बनी हुई होती है? What does the cell wall is made up of? Cell wall is made up of a very interesting thing, that is carbohydrates. Carbohydrates का नाम हम सबने सुना होगा, जो कि शुगर्स होते हैं, but there is a slightest difference between that. शुगर हमने सुना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, सुक्रोज सबने सुना है, but वो तो सिंपल शुगर्स हो गए. दिस सेल वॉल इज बीइंग मेड अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स शुगर. सो व्हाट हैपेंस? देयर इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड एज, कौन सा हो गया? कॉल्ड एज सेल्यूलोज. सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट. ऑलराइट, सो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है. इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड विच इज बीइंग कॉल्ड एज सेल्यूलोज. ऑलराइट, इसके अलावा और क्या कर सकती है? ये क्या करवा सकती है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप. मेंटेन्स शेप. शेप मेंटेन करने में बहुत काम में आती है. क्यों? क्योंकि एज आई टोल्ड यू दैट this plasma membrane, which is the inside portion, which is the inside covering of the cell, which is actually protecting the cell organelles, is not that strong that it can protect the plant in the harsh environment. अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्लांट्स को सेव कर सके हार्श एनवायरनमेंट में, क्योंकि प्लांट्स के पास हमारे जैसे घर नहीं है, उनको बाहर ही रहना होता है. अभी तो लॉकडाउन में हम लोग अंदर है, वेयर इनसाइड वी आर सेफ. But what about plants? They have to live outside, whether it's a lockdown, whether it's not a lockdown. They have to live out. तो उनको क्या जरूरी है? This cell wall is important.
और ये सेल वॉल उनको इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर शेप टू द सेल। तुमने देखा ना कैसे, हैव यू एवर सीन द बार्क ऑफ द प्लांट, कैसा होता है ना, मजबूत सा होता है, स्ट्रॉन्ग, रिजिड, इट इज हार्ड, इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल। ऑलराइट, नाउ what else the cell wall do? क्या एक्स्ट्रा और चीज ऐसा क्या करती है सेल वॉल? तो सेल वॉल और क्या कर सकती है, लेट्स डिस्कस ओवर हियर। अभी हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट करती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, इट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। इसके अलावा देयर इज अनदर प्रोसेस इन द सेल वॉल इज दैट, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि प्लांट्स जो है वो सूखना शुरू हो जाते हैं, दे गेट्स ड्राइड अप, द प्लांट्स गेट्स ड्राइड अप। Why does it happens? Because it happens because when the living plant, actually the living plant, when this living plant, they start losing water. जब एक जिंदा पेड़, एक living plant जब water lose करना शुरू कर देता है, which means उसमें से water धीरे-धीरे because of the sunlight, harsh sunlight, especially in summers, जब वो खत्म होना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, तो जो आपके जो सेल ऑर्गेनीज हैं, जो सेल है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। मतलब ये जो आपकी सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअली में, this cell membrane will start shrinking. Okay, it will start shrinking and contracting like this. It will just contract. So what will happen, because it is contracting, I just did another diagram. So this is the diagram which is in the normal conditions. अब अगर water उसमें से सूखना शुरू हो जाए, it gets dried up, the water starts evaporating from the living plant cell. So क्या होगा, look at the condition. So this is now your cell wall, cell membrane, and this is your सेल वॉल। तो क्या हुआ, ये यहां से क्या हो गई, यहां तक आ गई, सॉरी शेप थोड़ा डिफरेंट है बट इट इज एक्चुअली द सेम थिंग। अब चाहे तो मैं इसको भी आई जस्ट मेक एग्जैक्टली लाइक दिस। सो दिस इज द ओरिजिनल कंडीशन विच वॉज बीन देयर। ओके, सो दिस वॉज योर सेल वॉल एंड this was your cell membrane, ठीक है, alright. Now this happens, ये कब हुआ, when the living plant start losing the water. This happens when living plant, sorry यहाँ लिखते हैं अपन इसको, ठीक है ना, we'll write on that. So यहाँ पे क्या हुआ, cell membrane के साथ में क्या हुआ, it got shrinked. अब अगर सेल श्रिंक हो रहा है, the cell started losing the water, which is this water which is present inside the cell, it has started losing. तो क्या होगा, the cell will start shrinking and the organelles will come closer and closer, which means the cell is dying. Probably the cell is dying. तो क्या होगा, because ये shrink हो रहा है, so it has moved away from the cell wall. This whole process of shrinking of the cell because of the losing of the water is called plasmolysis. Okay, so what we can write about this whole thing is that living cell lose water, क्या होगा lose water करने पे, living cell lose water, cell shrinks, alright, the cell starts shrinking, okay, because the cell shrinks, moves away from cell wall, alright, it starts moving away from the cell wall. Last में क्या होगा, what the process is being termed as, process is plasmolysis. Okay, alright, so this happens, this is the whole process. These are the two diagrams which are responsible for this whole chart. What happened, living plant, write a plant, living plant, or we'll write it over here, the whole thing. Living plant lose water. Okay, living plant lose water. ये living plant है, water lose करना शुरू किया. What happens? Cell shrinks. Cell का shrinking शुरू हो गई. Cell shrinking शुरू हुई तो क्या हुआ? The distance between the cell wall and the cell membrane, it increased. Okay, so moves away from the cell wall. So the cell membrane has started moving away from the cell wall, and the process is being called as plasmolysis. So this is another concept which was being there. Okay, now because the plasmolysis होता है, it occurs. So
It should not occur frequently. अब suppose करिए यहाँ पे ये cell wall होती ही नहीं है, plant has to live outside in the environment. Suppose the cell wall not be there and the plant has to live outside in the environment. So in that case, what will happen? In that case, this plant won't be able to survive. There will be more and more plasmolysis that could have taken place. तो ज़्यादा से ज़्यादा plasmolysis होता. अभी भी plasmolysis होता है. How does the plant dies? Is because of the shrinking or losing away of that water. Okay? तो होता है, but because of the cell wall, it protects. Most of the time, the plant protects the plant. The cell wall protects the plant from getting, from losing the plasma, from losing the water or the chance of occurring of plasmolysis. Okay? So हम एक और feature इसका क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? That cell wall prevents the plasmolysis. Okay? This is another feature of your cell wall. All right? एक और क्या feature अभी add कर लिया हम लोगों ने? इसके अंदर सेल वॉल, व्हाट इट डज, सेल वॉल प्रिवेंट्स plasmolysis. Okay, so it does all these things. Fine. So this is all about the cell wall. One more thing that I would like to add over here is that basically what happens in the चलिए वो हम आगे न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, वो हम चीज न्यूक्लियस में डिस्कस करेंगे, वो वहां पे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात पूरी सेल वॉल की. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी गोना स्टडी ओवर हियर इज योर न्यूक्लियस. और वी कैन कंटिन्यू विद द साइटोप्लाज्म. आई गेस साइटोप्लाज्म वुड बी मच बेटर. पहले हम बाहर का पढ़ते हैं सारा. Like we have discussed the plasma membrane, then we discussed the cell wall, which is an extra outer covering present outside the plasma membrane. Now we will enter inside the cell. हम सेल के अंदर जा रहे हैं, और सेल के अंदर जाने के बाद the first thing that we gonna study when we enter inside the cell is the cytoplasm. If you remember, while discussing the discovery of the cell, we discussed who gave the term. Actually, the term was being given protoplasm. It was given by Kontekst. Okay, if you remember, the Kontekst had given the term, the protoplasm, which is now being called as cytoplasm. So the first thing that we discussed, which is a kind of a liquid structure, liquid thing in the cell, is the cytoplasm. Okay, cytoplasm. तो क्या होता है cytoplasm? हम इस डायग्राम को फिर से ध्यान में लेंगे because it is very important. ओके, तो ये हमारा सेल हो गया. अभी मैं इसके बाहर से आई जस्ट रब द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट फ्रॉम इट. ओके, बिकॉज हमें अभी जो काम है वो वी ओनली हैव द वर्क विद द सेल एंड द साइटोप्लाज्म. ओके, सो दिस इज योर सेल एंड आई जस्ट गिव अ स्लफ थिंग. दिस इज योर cytoplasm. Okay, this is your cytoplasm that we're going to discuss over here. So क्या करता है cytoplasm? Why cytoplasm is so important? We are discussing cytoplasm. So cytoplasm is basically a gel-like structure or fluid-like thing. Okay, fluid जैसा है, पानी के जैसा है. Okay, so it is basically it is filled with lot of nutrients. Okay, lot of enzymes. All the nutrients that a cell requires to survive is present in the cytoplasm. Okay, so why the cytoplasm is important? क्या है ये? Gel-like substance. Okay, it's a gel-like substance has been there. Fine. What it contains? Contains what? It contains nutrients. ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स सेल के सर्वाइवल के लिए काम में आते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है. ऑर्गेनेलीज को, जितने भी सेल के ऑर्गेनेलीज हैं उन सबको साइटोप्लाज्म न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. जैसे हमें होती है वैसे सेल को भी होती है. द सेम वे, द वे वी रिक्वायर द न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव, इन द सेम वे द प्लांट्स आल्सो, द सेल आल्सो रिक्वायर्स द न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव. सो ऑल दोस न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड इन द साइटोप्लाज्म. दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ओके, इसके अलावा और क्या होता है उसके अंदर? इट कंटेन्स एंजाइम्स.
ओके, और सेल ऑर्गेनेल्स, इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स, ओके, इट कंटेन्स ऑल दीज थिंग्स, फाइन। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया कि ये वी हैव दीज थिंग्स लाइक इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस, इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, इट कंटेन्स एंजाइम्स, इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स, बट is the cytoplasm is only about this thing only, which means it is only this much. Does it contains anything else? Okay, so we'll understand with a small diagram over here. So we have discussed this is your cell and this is your cytoplasm, but actually थोड़ा सा difference है। अगर मैं पूरे में थोड़ा सा difference करूँ यहाँ पे, so I'm going to make this diagram more clear. Okay, fine. See what happens is, थोड़ा सा इसको हम ऐसे पतला करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मैं 2 लेयर बनाने वाली हूँ। ओके, सी साइटोप्लाज्म एक्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कैसे होता है? 2 कलर यूज कर रही हूँ यहाँ पे। ये हमारी सेल वॉल है या प्लाज्मा, या सॉरी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दी सेल। इसके साथ में आई एम जस्ट मेकिंग दिस रेड कलर डायग्राम। Okay, this is, as I told you, cytoplasm actually divides into 2 parts. Cytoplasm divides into 2 parts. So the part which is just adjoining or just beneath, मतलब या तो cytoplasm के बिल्कुल adjoining हो या बिल्कुल उसके जो नीचे होता है, वो कहलाता है ectoplasm. Okay, this is called ectoplasm, which is just cytoplasm ही है, this is cytoplasm only, but it is called ectoplasm because it is present just beneath or just adjoining the plasma membrane or cell membrane. जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, अंदर की तरफ, we have a more dense structure. This dense structure, ये जो dense structure है, this one, ये blue वाला, ये कहलाता है हमारा endoplasm. Okay, this is called endoplasm. Alright, so we have divided cytoplasm into 2 parts, the ectoplasm and the endoplasm. Ectoplasm जो कि बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में है, which is just adjoining or just beneath the plasma membrane, and the second one is endoplasm, which is inside, which is in the center, present in the center. तो थोड़ा सा हम लोग ectoplasm will discuss a bit about ectoplasm and the endoplasm over here. Okay. So we are going to divide this cytoplasm into 2 parts. Fine. एक हो गया हमारा ectoplasm. ओके, और दूसरा हो गया endoplasm. Fine. Now ectoplasm कहाँ प्रेजेंट है? Where is ectoplasm present? Beneath plasma membrane. बिल्कुल beneath. Okay. Endoplasm कहाँ present है? This endoplasm, it is present inner side. Inner side में है, अंदर की तरफ है, और सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? Surrounding न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ सबसे ज्यादा। ओके, सेकेंड पॉइंट ये वाला, दिस वन इज लेस डेंसर, दिस वन इज हाईली डेंस्ड, दिस वन इज हाईली डेंस्ड। एंडोप्लाज्म हाईली डेंस्ड होता है, थिक होता है, एकदम थिक। ओके, this is thin, okay, this is thick in nature. Fine, ये है non granulated. ये ectoplasm is non granulated, which means away from all the granules and everything. ये granulated होता है because यहाँ पे काफी सारी
सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये हमने एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस किया है बिटवीन द एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट है? बेनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर में है, ठीक है, आउटर साइड में, ओके। एक्टोप्लाज्म कहाँ है? बेनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटसाइड, ये रहा। एंडोप्लाज्म कहाँ है? अंदर की तरफ, इनर साइड के अंदर, ओके। सराउंडेड, बेसिकली सराउंडिंग द न्यूक्लियस, यू विल सी इट सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ये क्या है? एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इज लेस डेंस, वेयर द एंडोप्लाज्म इज हाईली डेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, काफी गाढ़ा होता है, फाइन। इसके अलावा थिन होता है, मतलब पतला होगा बिल्कुल, फाइन। ज्यादा कंसिस्टेंसी इसकी हार्ड थिक नहीं होती है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हार्ड थिक होगी, फाइन। ये एक्टोप्लाज्म इट इज नॉन ग्रैन्युलेटेड, मतलब ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, सिंपल सा होता है। नाउ व्हाट थिंग्स आर प्रेजेंट इन द एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म? मैंने आपको बोला दैट देयर आर एंजाइम्स आर बीइंग देयर, देयर आर ऑर्गेनेल्स आर बीइंग देयर, देयर आर other materials are being there, so which are present, okay. A very important point is also being there, which I would like to discuss. Okay, we'll discuss in the next section of this ectoplasm and endoplasm, okay. Why ectoplasm is so important, why we are discussing even ectoplasm, why we haven't discussed, like we could have included with the endoplasm only. What is the use? Just because it looks different from the endoplasm, why is it so important? See, the reason behind ectoplasm is so important is because in most of the eukaryotes, like in many eukaryotes like amoeba is a eukaryote, so what it helps in the locomotion. Thin है ना, बिल्कुल पानी की जैसा पतला है, it is fluid like structure, very fluid like structure, thin, it is less dense, so it actually helps in the movement, because amoeba का shape, the shape of the amoeba is not regular, amoeba has an irregular shape. अब वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक्टोप्लाज्म जो होता है वो इजीली मूव करता है वहां पे. दिस एक्टोप्लाज्म कैन मूव इजीली, बिकॉज ऑफ दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन आल्सो मूव इजीली हियर एंड देयर चेंजिंग इट्स शेप. ओके, सो हेल्प्स इन locomotion of eukaryotes. Fine. Example you can take is amoeba. Okay, amoeba के साथ में ऐसा होता है. Okay, whereas if you talk about the endoplasm, endoplasm इतना क्यों जरूरी है? See, endoplasm इतना क्यों जरूरी है? वो इसकी इस वजह से है क्योंकि जो एंडोप्लाज्म होता है, बेसिकली द एंडोप्लाज्म कंटेन्स मेनी थिंग्स लाइक अमीनो एसिड्स. पता है हमें अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन फॉर्मेशन. इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स और एंजाइम्स, लिपिड्स, व्हाट एल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, सारे सेल ऑर्गेनेल्स एक ही होता है. ठीक है, सर्टेन इनऑर्गेनिक ions. If you remember, when we were discussing the plasma membrane and we were discussing the cell, I told you that we're discussing the osmosis. Basically, we're discussing the osmosis, the diffusion process. I stated you that there are certain ions which move and they require energy during the movement. Okay, because plants, their cell requires energy. Okay, it requires energy, and from where do they get this energy? They get it from the nutrients. So those nutrients, while transporting inside and outside the cell, they require energy. Now, from where does the energy comes from? It comes from the ions. हम लोग ने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में मूवमेंट के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी लगती है. वो एनर्जी जो आती है बेसिकली वो उसके लिए हमें उसमें भी आयंस की भी इंपॉर्टेंस पड़ती है. जैसे आयंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहां हमने आयंस का डिस्कशन किया था. इफ यू जस्ट गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, यू विल इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव डिस्कस्ड इनऑर्गेनिक आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. ओके, सो एक्टोप्लाज्म क्या है? लोकोमोशन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है. वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग कि सबसे ज्यादा लोकोमोशन में हमें ये काम में आने वाला है. ओके, एंडोप्लाज्म इन्हीं जगहों पे हमें काम में आता है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूरे साइटोप्लाज्म की, अगर हम बात करते हैं द होल साइटोप्लाज्म, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सेल शेप. मेंटेन सेल शेप.
ओके, सेल शेप में बहुत इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेल शेप में काम में आता है। इसके अलावा कहाँ काम में आएगा? मूवमेंट ऑफ सॉरी नॉट मूवमेंट, मूवमेंट में नहीं, ये हमें काम में आता है सेलुलर फंक्शंस के अंदर। ऑल दी सेलुलर फंक्शंस, प्रोटीन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ mRNA, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन आउटसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द सेल। ओके, आउटसाइड द सेल जब होता है ट्रांसलेशन और ट्रांजिशन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर पढ़ जाएंगे हम लोग, जब वहां पे उस तक पहुंचेंगे विल गेट टू नो कि सेलुलर जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, सेलुलर प्रोसेसिंग जितनी भी होती है हमारी, उसके अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सारे एंजाइम्स, ये सब चीजें which are responsible for the cellular functioning or for the cellular processing, they all these things are present in the cytoplasm only. Okay, so this ectoplasm is actually helping in the movement, whereas the endoplasm is helping in the all these functions. इसके अलावा एक और ectoplasm का फंक्शन जो भी मुझे आ रहा है वो है कि it contains the actin fiber. Actin fiber. Actin fiber का हम बात करते हैं, actin fiber is actually helps in flexibility. Actin fiber provides elasticity or flexibility to cell. Okay, cell को elasticity provide करवाता है ectoplasm. This ectoplasm also contain actin fibers. आपने पढ़ा होगा actin fibers, actin and myosin fibers के बारे में जो हमारे मसल्स में होते हैं. So actin fiber, this actin fiber is present in the ectoplasm. This ectoplasm, because of that, it is so elastic in nature. Okay, so these are the few things that we have discussed about cytoplasm. जो हमने पढ़ा, जेल-लाइक स्ट्रक्चर है, घर है, it is a home of many cellular activities. इसके अलावा it is being divided into ectoplasm and endoplasm. दो पार्ट में डिवाइड किया हमने इसको. ectoplasm, where the ectoplasm is being present, it is present outside, it just beneath the plasma membrane और दी सेल मेम्ब्रेन वहां प्रेजेंट है. एंडोप्लाज्म इनर साइड में प्रेजेंट है. ठीक है, कहाँ काम में आता है? लोकोमोशन में काम में आता है, जस्ट लाइक अमीबा. फाइन. एंडोप्लाज्म कहाँ काम में आ रहा है? अमीनो एसिड्स वहां फॉर्म होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आपको वहां मिलेंगे, एंजाइम्स आपको वहां मिलेंगे, लिपिड्स का फॉर्मेशन है, उनकी फंक्शनिंग वहां होती है. सेल ऑर्गेनेलीज, ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इन द एंडोप्लाज्म ऑन द सेंटर ओवर हियर. इनऑर्गेनिक आयंस है, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. एंडोप्लाज्म सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? इट विल ऑलवेज बी फाउंड मोस्टली नियर दी सराउंडिंग द न्यूक्लियस. ओके, फाइन. एक्टोप्लाज्म का हमने पढ़ा, इट कंटेन्स एक्टिन फाइबर. एक्टोप्लाज्म कंटेन्स एक्टिन फाइबर विच प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इट हेल्प्स इन द लोकोमोशन, मूवमेंट में. अमीबा जो बार बार अपना जल्दी जल्दी शेप चेंज करता है, इट इज बिकॉज द अमीबा कैन चेंज इट्स शेप because of the actin fiber which is being present over there in this one. All right. All right. So till today we have discussed, हम लोग ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? हम लोग ने we have discussed the fourth, we are discussing the fourth topic in the fundamental unit of life, that is cell, the cell structure. So cell structure में we have covered the plasma membrane, we have covered the cell wall, and we have covered the cytoplasm. Okay. The more of the things are being remaining, but we'll continue them in the next class. And I hope you have liked today's lesson. And if there is any comment, suggestion, or question is being there, you can easily drop them in the comment box below. And for more such updates, please also hit the bell icon so that you can get the timely updates. Thank you. Bye. See ya.